Hi everyone, my name is Manish Chouhan and chemistry is my profession. Let's start with a new chapter and that is acids, bases and salts. Now, the word acid comes from a Latin word known as acidus. Acidus means what? Sour in taste. Sour means khatta. Khatta taste. Okay? Now, in our daily life, where you have seen acids, sir, acid, the thing which have sour taste. Sir, sour taste में तो आते हैं टमाटर. Sir, sour taste में आती है इमली. Sir, they all have खट्टा taste, sour taste. So let's see the naturally occurring acids. Okay, my dear, just look at here. What is it written? It is written vinegar. Vinegar mein which acid is present? Sir, the main acid in vinegar is the acid present in this is acetic acid. Which acid? Acetic acid. The formula of this CH3COOH, acetic acid. Board will ask you this question, what is vinegar? So vinegar is nothing. It is a dilute solution of what? Acetic acid. Next. Now, can you see this image? Now in citrus fruits, which acid is present? In citrus fruits, we have citric acid. Citric acid. Rancid butter. बटर में विच अच्छा आप लोगों ने कभी ताजा ताजा बटर खाया होगा, उसका टेस्ट अलग होगा, लेकिन वही बटर मैं कहता हूं आप 4-5 दिन के बाद खाइए तो आपको उसमें खटास आएगी. यू विल सी कि यस इट इज खट्टा इन टेस्ट. नाउ which acid is present in that? That is butyric acid. Which acid? Butyric acid. Now sting of bees and ants. आपको कभी किसी चींटी ने काटा होगा? जी सर काटा है. जब वो चींटी काटती है तो विच एसिड, वो कौन सा एसिड उसमें इंजेक्ट करती है? एंड दैट एसिड इज नोन एज फॉर्मिक एसिड. विच एसिड? फॉर्मिक एसिड. Now, formic acid. What is the formula of formic acid? HCOOH. I want you to remember three formulas. Number one, acetic acid, that is CH3COOH. Second is formic acid, that is HCOOH. जब मैं ऑर्गेनिक कवर करूंगा आपके साथ, then I will tell you how to write these formulas. Now, right now, what is more important is for you is that you should know the name formic acid, acetic acid. They are the common names of the acids, right? Naturally occurring acids. Next, now in this image, what do you see? This is sour milk. In sour milk, which acid is present? That is lactic acid. Which acid is present? Lactic acid. Next, apple. Now, I'll give you one example. I'm from Himachal. Okay? और हिमाचल में मेरी एक खुद की लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, और वहां पे मेरे बहुत सारे सेब के बागीचे हैं. ठीक है, मैं मालिक हूं उनका. तो आपको इस टेक्निक से याद रखना, मनीष सर फ्रॉम हिमाचल, और वह उनके बागीचे हैं किसके? सेब के. उसके वो क्या है? मालिक. मालिक से बन गया मालिक. सो एप्पल्स में विच एसिड इज प्रेजेंट? मैलिक एसिड. विच एसिड? तो अगली बार मैं आपसे पूछूंगा, मनीष सर फ्रॉम वेयर? हिमाचल. हिमाचल में उनके क्या है? बागीचे. किस चीज के? एप्पल के. अगर एप्पल के मालिक मतलब मैलिक एसिड. नेक्स्ट, ऑलिव ऑयल. विच एसिड इज प्रेजेंट? ओलिक एसिड. विच एसिड? ओलिक एसिड. नेक्स्ट, tomatoes. Tomatoes. Which acid? Oxalic. Oxalic acid. What is the formula of oxalic acid?
COOH, COOH. So just remember three organic acids. Number one, that is oxalic acid, acetic acid, and formic acid. Right? Then tamarind. Tamarind, imli, which acid? Sir, tartaric acid. Tartaric acid. Next, urine. Which acid is present in urine? Uric acid. Okay, in our stomach we have acid. You know which acid is present? That is hydrochloric acid. In urine, which acid is present? That is uric acid. Next, sir, we have seen so many acids, and what we have understood is that acid they all have which taste? Sour taste. But what is the actual definition of acid? Acid होता क्या है? ठीक है? So let me tell you, the acid are the compounds which contain one or more hydrogen atom. They contain what? One or more hydrogen atom. And when you dissolve in water, they produce hydronium ion. They produce hydronium ion. Now, before starting with this, I'll give you one example and then let's try to understand. See, there are so many compounds. They contain hydrogen atom. But they will behave acid only when they produce hydronium ion. If they don't produce hydronium ion, or if they don't give H positive ion in water, so they will not be called as what? They will not considered as acids. Acid होने के लिए मेरा बच्चा, they have to produce hydronium ion. चलो एक स्टोरी से समझाता हूँ. मेरा नाम मनीष चौहान. ओके. मेरा दोस्त राहुल बाबा. ओके. मेरा दूसरा दोस्त, उसका नाम हिमांशु बाबा. ओके. अब एक बच्चा आया, कहता सर मुझे ना 10,000 की जरूरत है. राहुल सर प्लीज गिव मी 10,000 bucks. ठीक. अच्छा. राहुल सर कहते हैं अरे रुक जाइए मेरे पास अभी है नहीं, मैं आपको 4-5 दिन में देता हूं. ठीक है जी. फिर वो बच्चा गया किसके पास? हिमांशु बाबा के पास. हिमांशु बाबा, अरे बेटा अभी तुम एक काम करना, 10 दिन के बाद आना. फिर वो बच्चा आया मेरे पास, मुझे कहता है सर मुझे 10,000 की जरूरत है, क्या आप दे सकते हैं? मैंने कहा ये ले बेटा. अब मुझे ये एक बात बताओ, इन तीनों में सबके पास 10,000 रुपए, लेकिन दिए किसने 10,000? मनीष सर ने. तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इनमें दानवीर कौन हुआ? मनीष सर. और बाकी दो, ये दानवीर नहीं कहलाएंगे, इन्होंने कोई दान नहीं किया. दे हैव नॉट गिवन व्हाट? हाइड्रोनियम आयन. इन्होंने हाइड्रोनियम आयन नहीं दिए. इन्होंने what I want to say is कि सारे एसिड they give what? H positive ion. जो H positive ion देगा वही एसिड कहलाएगा, जो नहीं देगा वो एसिड नहीं कहलाएगा. Right? So this is the definition: compound which contain one or more hydrogen atoms and when dissolved in water produce hydronium ion, the only positively charged ion. एग्जाम्पल के तौर में आइए इसको समझते हैं. दिस इज HCl and this is water. Now what will happen? This H will go and attack here and it will form H3O positive plus Cl negative. तो HCl ने मेरे बच्चा पानी में जैसे आपने इसको डाला तो कितने हाइड्रोनियम आयन दिए? 1. So this HCl is called what? This is called acid. This is called hydrochloric acid. I'll give you one more example. This is sulfuric acid. Sir, पानी में H2SO4 को आपने किस में ऐड किया? वाटर में. So it will give 2H positive and those 2H positive will combine with water and you will get 2 hydronium ion plus SO4 2 negative. So HCl and H2SO4 they both behaves as acid. I hope it is clear to everyone. Now let's start with classification of acids. अब जब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे नाम आएंगे.
ओके, सो व्हाट आर दोज एसिड, लाइक आपको सुनने को ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ऐसे बहुत सारे नाम आप सुनेंगे. सो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड, inorganic acid, strong acid, weak acid, hydro acid, oxy acid, concentrated acid, dilute acid. Let's see. Now, what is organic acids? So simply you have to remember organic acid, they obtain from plants and they contain carbon atom. And they contain carbon atom. Right? Example. The first example, again I'll repeat. Acetic acid. Sir, it contains, what is the formula? CH3COOH. Now this acid is known as organic acid. Then formic acid. Formic acid. What is the formula? HCOOH. Sir, formic acid. Why they are called organic? Because they contain carbon. They contain carbon. One more. Oxalic acid. Oxalic acid. What is the formula? COOH. COOH. This is the formula of oxalic acids. Right? अब आ जाइए. Inorganic acid. Acid which are obtained usually from minerals. They are known as inorganic acids and they do not contain carbon. Sir, example like HCl. अब आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. HCl लिखा है, आप इसको प्रोनाउंस कैसे करते हो, इसको बोलते क्या हो? अगर बोर्ड में कभी HCl गैस लिखा हुआ मिल जाए तो याद रखना इसे कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड. इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड. लेकिन जब ये HCl पानी में डिसॉल्व कर दो आप, दिस गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. तो जब इसमें डिसॉल्व होगा, देन यू कॉल इट व्हाट? देन यू विल से इट बिकम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बच्चों को ये मालूम नहीं होता व्हेन टू राइट हाइड्रोजन क्लोराइड एंड व्हेन टू राइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. If someone writes in front of you dilute HCl, so it is dilute hydrochloric acid, then you cannot call it dilute hydrogen chloride. Hydrogen chloride is a molecule, it's a gas. Okay? और जब आप इसको पानी में मिला देंगे तब ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये याद रखिएगा. So hydrochloric acid is what? It's a mineral acid. It's a mineral acid. Right? Then one more example. Like H2SO4. H2SO4 को आप पानी में मिलाइए. Okay, what you will get? Sir, I'll get 2 hydronium ion plus sulfate ion. So what is the name of this? The name of this is sulfuric acid. What is this? Sulfuric acid. अब बच्चों को ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है. चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ. मैजिक. मैजिक. ये कौन है? SO4 2 नेगेटिव. जी सर, SO4 बोलते क्या हो आप लोग इसको? आप इसको बोलते हो सल्फेट. क्या कहते हो आप इसको? सल्फेट. ठीक. यहां पे चार्ज कितना दिखाई दे रहा है? 2 नेगेटिव. कितनी लड़कियां दिखाई दे रही है? सर 2 नेगेटिव. 2. इनकी शादी करनी है. ठीक है, 2 लड़कियों के लिए कितने लड़के लगेंगे? सर 2 लड़के. तो आन दो 2 लड़के, ये 2 लड़के. तो ये पॉजिटिव 2 पॉजिटिव विल कैंसिल एंड यू विल गेट व्हाट? H2SO4. समझाने का तरीका है, सल्फेट में, सल्फेट के पिछवाड़े में कौन सा साउंड आ रहा है? 8. कौन सा साउंड आ रहा है? 8. और जब इसके साथ H जुड़ जाएंगे तो फिर इसके नाम के पीछे क्या लग जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड. जितने भी एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, इन सब के नाम के पीछे देखो क्या लग रहा है? इक. क्या लग रहा है? इक. याद रखना 8 में जब किसी भी 8 में जब H पॉजिटिव जुड़ेंगे तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा? इक. तो सल्फेट से क्या बन गया?
सल्फ्यूरिक। अच्छा, ये क्या लिखा है? SO3 2 नेगेटिव। व्हाट इज दिस नोन एज? सल्फाइड। व्हाट इज दिस? दिस इज सल्फेट। सल्फेट और सल्फाइड में किस चीज का फर्क है? सर, सल्फेट और सल्फाइड में एक ऑक्सीजन कम है। इसके साथ कितने H पॉजिटिव लगेंगे? सर, इसके साथ भी 2 H पॉजिटिव। व्हाट इट बिकम्स? इट बिकम्स H2SO3. अब it will change into what? It will change into us. So what is the name of this? Sulfurous. Sulfurous acid. सर, ऐसे जरा एक और ट्राई करते हैं. Let's see one more. Let's see one more. What is this written? NO3 negative. कितनी लड़कियां दिखाई दे रही? सर, एक. कितने लड़के आए? सर, H positive negative. What it becomes? HNO3. तो बेटा, ये what is this written? Sir, this is written nitrate. What is this written? Nitrate. Nitrate में क्या लग गया? H positive. What it becomes? Nitric. What it becomes? Nitric acid. What is this written? NO2 negative. What is this? Sir, this is nitrite. Nitrite में one H positive is attached. Like this. What it becomes? HNO2. What is this known as? Nitrous acid. So how many acids you have learned? Sir, hydrochloric acid, HCl. What is the formula of sulfuric acid? H2SO4. What is the formula of nitric acid? HNO3. What is the formula of nitrous acid? HNO2. मैं बार बार आपके लिए बोलता जाऊंगा, मैं आपके खून में मिला दूंगा केमिस्ट्री. आप बोलेंगे सर बोल बोल के चीजें याद हो जाएंगी, बोल बोल के चीजें याद हो जाएंगी. और वाली कहावत सुनिए, पत्थर तू कैसे गोल, कहता लुढ़क लुढ़क के गोल. तो आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने आप शार्प होते जाएंगे. तो हाउ मेनी एसिड्स वी हैव लर्न? Number 1, sir, we have seen organic acid. Organic acid, they contain carbon. Inorganic acid, they do not contain carbon. But I am going to give you one exception. What is that exception? Can you see what is this written? CO3 2 negative. How many H positive will come? Sir, 2 H positive will come. Cut this positive charge. What will you get? H2CO3. H2CO3 is known as what? This is carbonate. And what is this? Carbonic acid. This is carbonic acid. Now, carbonic acid, in this, sir, carbon is present. What do you call it? No, this comes in inorganic acid. This is an exceptional case. It contains carbon, but it is inorganic acid. Right? And this you use in what? In soft drinks. In soft drink. Right? So, next. So, in the moral of the story, I hope you all have seen the slide. Acetic acid, CH3COOH. Hydrochloric acid, HCl. HCl, when you dissolve in water, it will give you one hydronium ion. Then H2SO4. Water, you will get two hydronium ion. Nitric acid. So, sulfuric, sulfurous. Nitric, nitrous. Okay, one more I have left. Let me do that for you again. Now, what is this written? PO4 3 negative. How many girls are there? Sir, 3. How many H positive will come? 3. Now, this is phosphate. This is phosphate. So, what it becomes? It becomes H3PO4. H3PO4 is phosphoric acid. Very, very important. Now, one oxygen less. PO4, PO3, 3 negative. What is this? Phosphite. What is this? Phosphite. How many girls are there? Sir, 3. How many boys will come? 3 positive. Now this cancel out. What it becomes? H3PO3. It is phosphite. It will change into phosphorus. It will change into phosphorus acid. Then what is this? PO2 3 negative. Anyone? This is known as hypophosphite. Hypophosphite.
How many boys will come? H positive like this. What it becomes? H3PO2. So what is the name of this? Hypophosphorus. हाइपोफॉस्फोरस एसिड। आपको बस एक बात याद रखनी है कि 8 जो है ना वो इक में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 जो है वो अस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाइट्रेट विल चेंज इनटू नाइट्रिक, नाइट्राइट विल चेंज इनटू नाइट्रस, फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू phosphoric acid, phosphide will change into phosphorus acid, and hypophosphite will change into hypophosphorus acid. I hope it is clear. All these are known as what? Mineral acids. आगे चलते हैं। ओके, नाउ अब आ जाओ किसके ऊपर? स्ट्रॉन्ग एसिड। एक बार मैंने बच्चे से पूछा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो बच्चा पता क्या कहता? बच्चा कहता सर किसी के ऊपर फेंक दो तो वो जल जाएगा सर, खतरनाक। अरे नहीं बाबा, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब पता क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए सिर्फ आपको एक वर्ड लिखना है, विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। अच्छा, इस बात को ऐसे समझते हैं, देखना ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये मनीष, ये कोई है, ये कोई आदमी है और ये उसकी वाइफ है। अरे यार, वाइफ अच्छे से मैंने बनाई नहीं, जरा ध्यान से देखें। ये इसकी मैंने वाइफ, ये वाइफ है, टोइंग। ये कौन है? इसकी वाइफ। ठीक है, ये कपल है, ये क्या है? कपल। ठीक, मेरी बात का जवाब देना। ठीक है, और ऐसे कपल कितने? 100। राइट, वेरी गुड। अब ये गए कहां? भोपाल हाई कोर्ट में। किसमें गए? भोपाल हाई कोर्ट में। और भोपाल हाई कोर्ट में इनको मिल गया डिवोर्स। अब मुझे बताओ कितने मेल आजाद हो गए? कितने मेल आजाद हो गए? ठीक है, तो 100 कपल थे तो 100 मेल आजाद हो गए। कितनी फीमेल हैं जो आजाद हो गई? कितनी? सर 100 फीमेल आजाद हो गई। मतलब अब मुझे बताओ सोसाइटी में कितने कपल हैं, कपल के फॉर्म में रह गए? 0। मतलब सभी के सभी को क्या मिल गया? सब आजाद हो गए, सब एक दूसरे से अलग हो गए, कंप्लीटली आयोनाइज। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज द मीनिंग हियर? व्हिच कंप्लीटली आयोनाइज in the solution, and now no more molecule is left. Only ions are very, very important point. Only ions are present in the solution. Board people, what they ask? They will ask, HCl is a strong acid. What kind of particles are present? So what will you write? You will write only ions are present. Now HCl is a strong acid. When you add in water, sometime you can write aqueous also. So what will you get? You will get hydronium ion and Cl negative ion, right? Or the better way, you can write like this also. See, HCl in water, you will see it will completely break down into what? H positive ion or Cl negative ion. Both the ways it is correct, right? So what is strong acid? Which completely ionize. And what particle is present? Only ions. Okay, now weak acids. What are weak acids? They do not ionize completely. Example, ये कौन है? सर ये कोई आदमी है। ये कौन है? ये उसकी वाइफ है। मैंने कहा ऐसे कपल कितने हैं? सर ऐसे कपल 100 हैं। मैंने कहा ये गए दिल्ली हाई कोर्ट। अब मुझे बताओ, दिल्ली हाई कोर्ट में इनमें से सिर्फ 5 कपल को मिली क्या? 5 कपल को मिला डिवोर्स। तो मुझे बताओ कितने आजाद हो गए? कितने मेल आजाद हो गए?
तो आप बोलोगे सर 5 मेल आजाद हो गए, कितनी फीमेल आजाद हो गई, बंधन मुक्त हो गई? सर 5। अच्छा मुझे बताओ अब कितने कपल हैं जो रह गए? तो आप बोलोगे सर 100 में से -5 कपल कर दो 95। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज कि ये क्या लिखा है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को आपने क्या किया, पानी में डाला, इट विल फॉर्म एसिटेट आइन प्लस H पॉजिटिव आइन। लेकिन ये पूरे के पूरे नहीं टूटे, इसमें से सिर्फ कुछ जो हैं वो टूटे हैं, ठीक? यानी कि 100 में से सिर्फ 5-6 मॉलिक्यूल्स टूट गए, यानी कि इट कंटेन बोथ, दिस इंटायर सॉल्यूशन कंटेन बोथ आइंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन यू विल गेट इन बोर्ड एग्जाम, strong acid, weak acid contain both ions as well as molecules, right? And the best example, weak acid, acetic acid. Next, अच्छा नोट करिएगा, all organic acids are weak acids. All organic acids are weak acids and they do not ionize completely in solution. They contain ions as well as molecules. All. Sir, acetic acid you have just now you have told, acetic acid ko you will add in water. What will you get? You will get hydronium ion plus acetate ion, right? One more example I will give you, formic acid, COOH plus water. मैं बोल बोल के तुमको याद कराता, H3O positive plus HCOO negative. So here both. अच्छा now I'll tell you one more thing. Whenever you write weak acid, तो weak acid में I suggest you better write double arrow. बेटर राइट? और स्ट्रॉन्ग के केस में लाइक HCl, HCl को आप पानी में डालिए, इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव। यहां पर सिंगल एरो लगाते हैं, डबल एरो कब लगाते हैं? हमेशा वीक एसिड के लिए, राइट? यू ऑलवेज पुट डबल एरो, दिस शोज दैट बोथ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर प्रेजेंट। नाउ so far what we have covered, we have covered organic acid, we have covered inorganic acid, we have seen strong acid, we have seen weak acid, and now let's see oxy acids. अब इसकी डेफिनेशन मेरे साथ याद करना, सारे एसिड में एक चीज कॉमन है and that is they all give H positive ion, they all produce hydronium ion, right? This is common with every acid. Now oxy acid को ऐसे याद करो, hydrogen atom present along with oxygen and some other non-metal. तीन लोग हैं, फिर से सुनिए, तीन लोग, मैं, मेरी वाइफ और वो। अब वो तीन लोग, मैं मतलब H positive and I am attached with what? Oxygen. Hydrogen along with oxygen and some other non-metal is present. They are called oxy acids. Okay, three things are present. Now I'll give you one example. Okay, I have written H2SO4. Now here hydrogen is present, sulfur is present, oxygen is present. So this is a oxy acid of sulfur, H2SO4. Board can ask you like this. हॉट्स का क्वेश्चन बनाना तो ऐसे पूछ सकते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. यू कैन राइट H2SO3 आल्सो, sulfurous acid. What is this? HNO3. So oxy acid of nitrogen is nitric acid or nitrous acid, right? Nitrous acid, sulfurous acid, they all comes in which category? They all comes in oxy acids. Sir, phosphoric acid, yes, H3PO4, oxy acid of phosphorus, H3PO3, phosphorus acid, H3PO2. What is this? Hypophosphorus acid. I hope this much is clear to everyone. Okay, now let's move.
Hydroacid. Hydroacid is nothing. There's a hydrogen and some non-metal is present. Okay, there's no oxygen, nothing. Hydroacid. They contain hydrogen and non-metallic element. They do not contain oxygen. And the better example everyone knows, HCl, HBr, HI. Right? Understood? Okay. Now, see, कितनी बार आप लैब में गए और लैब में मैम सर बोलते हैं बेटा गो एंड ब्रिंग दैट डाइल्यूट एसिड, ओके गो एंड ब्रिंग दैट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. चलो यार मैं आपके घर आया, मैंने कहा यार कुछ नींबू पानी पिला दो. आपने मुझे नींबू पानी पिलाया और उसमें आपने 10 नींबू निचोड़ दिया और पानी कम. तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा अरे बेटा आपने मुझे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पिला दिया. तो आप बोल रहे अरे सर सॉरी सर वो गलती से 10 नींबू डल गए थे, अभी इसका कुछ इलाज कर दें. तो आप उसमें क्या मिला दोगे? पानी. तो जब आप उसमें पानी ऐड करोगे इट बिकम्स व्हाट? डाइल्यूट. तो अब बार बार ये चीज देखोगे अब केमिस्ट्री में कि कहाँ ये डाइल्यूट वर्ड आता है और कहाँ ये कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड आता है. तो एसिड विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और नो वाटर, दे आर कॉल्ड concentrated acid. And you need to see if the amount of water is more with respect to acid, then it is called dilute acid, right? Next, or a very important question, everyone just note down what you have to write. Acid in water. Whenever you want to make any acidic solution, what you have to do is you need to put acid in water. ना कि pour acid into water, okay, right? But don't do like this. But don't do this. Sir, what? Water and acid. Don't do this. Sir, why? Because this reaction is what? Exothermic. And what happens when you add what? Water and acid? The reaction is exothermic and it splash out. एकदम इसमें से क्या निकलते हैं? एकदम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये पूरा का पूरा एसिड आप पे गिरेगा, राइट? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर इज नॉट एडेड टू एसिड as it is an exothermic process, and in this process so much heat is produced and it splashed out, right? So always add what? Acid in water, not water in acid, right? Next, now concentration of an acid simply tells us amount of water present in the acid, not the strength of the acid. Strength of the acid means क्या मतलब हुआ इसका? देखिए आपने एसिड को पानी में डाला, राइट? अब उसमें एसिड का अमाउंट कितना है? ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड, मैं क्या लिख रहा हूं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड से मेरा मतलब उसे ये नहीं पता लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है. स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड हमें नहीं पता लगता, राइट? क्वेश्चन like dilute HCl is a stronger acid than highly concentrated acetic acid. This question is very important, and what do you have to write? Dilute HCl is a strong acid. Why? Because sir, dilute HCl in water completely ionized. But here I am taking what? Concentrated acetic acid. Here acetic acid is a weak acid. It will dissociate to lesser extent. It will ionize to lesser extent. वो कम टूटेगा, इसलिए हम उसमें H positive का अमाउंट क्या है? कम. अगर this question comes in board exam, you have to write both the things. Dilute acid is a strong acid. Why it is a strong acid? Because it completely ionized. And acetic acid, okay, it is a weak acid. It do not completely ionize, right? Now, so in today's class, what we have discussed? The meaning of acid. The meaning of acid, we have discussed what is acid. The compound contains hydrogen, one or more hydrogen atom, and they produce hydronium ion when dissolved in water. Second, we have done classification of acids. Organic acids contain carbon atoms,
Inorganic acids, they do not contain carbon. Then we have discussed strong acid which completely ionize, weak acid which partially ionize, then hydro acid, they contain hydrogen and some non-metal, then oxy acid, hydrogen along with oxygen and non-metal, and then we have discussed dilute acid and concentrated acid. Dilute acid means acid and water both are present. Amount of water is more in comparison to acid, and concentrated acid means here amount of water is very less with comparison to acid, right? So आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे. Thank you very much. Bye bye.